रहे हैं जेई मेन 2025 क्वेश्चंस एंड दैट केमिकल इक्विलिब्रियम जनवरी शिफ्ट। लेट्स सी कि अप्रैल शिफ्ट से ये कितनी मुश्किल आई है या इजी आई है। सो लेट्स गो फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following that x2y will give you the x2 plus half of y2. So the equation represent the correct relation between the degree of dissociation of x2y with its equilibrium constant. ठीक है, x is very small. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड ऑन डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पर है, तो वही हम अप्लाई कर लेंगे के पी वैल्यू को निकालने के लिए। तो के पी इज बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, partial pressure of y2 to the power 1 by 2 and the partial pressure of x2y। सारे गैशियस सब्सटेंस थे तो हमने तीनों को कंसीडर कर लिया। At the same time we know that partial pressure would be is equal to mole fraction into pt according to the Dalton's partial pressure law। ठीक है, बस ये अप्लाई करते हैं इसके अंदर। So we have a main equation that is the x2y is giving us the x2 plus y2 1 by 2, all are gas। So let's say 1 0 0, this should be 1 minus x, this should be x and this should be x by 2। So total moles जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 minus x plus x by 2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 plus x by 2। ये टोटल मोल्स ये हमने लिए थे t इक्वल टू इनिशियल टाइम पर और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर। Let's apply this mole fraction term for each component in the main equation। So here the Kp should be is equal to partial pressure, so mole fraction of x2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितने दिए हुए हैं, x दिए हुए हैं एंड टोटल मोल्स है 1 प्लस एक्स बाय 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स बाय 2 इंटू पी टी। दिस इज फॉर x2। नाउ y2 के लिए लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन है x बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स बाय 2 into pt to the power 1 by 2 divide. Now the mole fraction of px2y, that should be 1 minus x upon 1 plus x by 2। So let's solve it। So on solution, this pt got cancelled, this is getting cancelled, this x we can ignore because it's a very small, considerably they have given it's a very small term। So that Kp value would be is equal to, that is x into x by 2 pt to the power 1 by 2। I'm again ignoring this x from here because it is very small, so we'll keep it only 1, divide by 1 minus x। So when you are getting this value, let's ignore this x value as well, so we can get it xp Kp would be is equal to, that is x by 2 to the power 1 by 2 and pt to the power 1 by 2। Since they are asking about the x value, let's make it a square both the side। So if we are doing the square both the side, we will get it the Kp square is equal to x square into x by 2 into pt। So we can get it here Kp square twice divided by pt should be is equal to x to the power 3। So your answer should be x to the power equal to twice of Kp square upon pt, the cube root of 3। So we got it the second number answer that we matched it। Now let's move to the next question number 2। A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with the pressure of 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into the CO on addition of graphite. The total pressure at equilibrium is 0.5. Find the Kp value। Similar pattern है, पहले इक्वेशन लिखनी होगी। So equation is CO2, that carbon graphite is solid, this is gas, will convert into the twice of CO, that is also gas। Since they have given everything in the pressure and Kp they are asking, so Kp value we know that it's a partial pressure of CO square divided by partial pressure of CO2, that's it। Carbon we will not consider, again we will apply the
pressure value whatever given in the question. So let's say t equal to 0 time per, this is p 0, t equal to equilibrium time per, p minus p dash, and this should be 2p dash. Okay, p value already given 0.5, and they are saying the total pressure at equilibrium means the equilibrium total pressure would be, I'm going to do the sum of the total pressure, ये रहा, इसको और इसका सम कर देंगे. So we got this answer. आंसर हमारे पास आ गया है p plus p dash. p की वैल्यू we already know 0.5, p dash we are not aware, but the total value, this equilibrium value is given 0.8. So p dash we will get it, that is the 0.3. p dash we get it, the 0.3. Let's put the value here. So here we got it, that is 2p dash means 2 into 0.3 square divide by p minus p dash, this value. So 0.5 minus 0.3. So when you calculate it, you will get the answer 1.8. This is the answer. So we will mark it. Let's move to the next question. 37.8 gram N2O5 was taken in 1 liter reaction vessel and allowed to undergo the reaction of following reaction at 500 Kelvin. Reaction is this. The total pressure at equilibrium is found 18.65. We have to find out the Kp. N2O5 behave ideally under all these conditions. R value is given. So since gram is given, let's find out the initial pressure is how much by using the PV is equal to nRT. So here that PV equal to nRT, that is the 37.8 gram divided by the molar mass. Molar mass of N2O5 is 108. R value is given 0.082. Temperature is given 500 and the volume is given 1 liter. So pressure should be is equal to, we will get it 14.35 atm or the bar. Now let's see, this was the initial pressure, we got it. So let's see what happened next, since we have to calculate the Kp value. So we have an equation, twice of N2O5 will give us the twice of N2O4 plus O2. So T equal to 0 time, that initial pressure 14.35, 0 and 0. Later it's become 14.35 minus 2p, 35 minus 2p, this is the 2p and this is p. So the total pressure we will get it here, Pt should be is equal to, that is 14.35. I'm going to do the sum of everything when we are doing the sum. So we will get it, that 14.35 plus p. So we will get the answer, Pt should be is equal to 4.3, we will get it, because total pressure was given 18.65. This was given 18.65. So P value we got it 4.3. So based on that, pressure of N2O4 and pressure of oxygen, all we can get it here. Now I'm going to apply, that is the K into the Kp value. So Kp is given, pressure of N2O4 whole twice square pressure of O2 divide by pressure of N2O5. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, that is N2O4 value is 8.6, because this is given 2p. So p value already we have, so we can just multiply. So this is become 2p square, it's become p, and this become, that is 14.35 minus 2p. P value is already given. When we are putting the value, so we will get it around, that is 961.9. So almost your answer would be, that is 962. That should be answer into 10 to power minus 2. 10 to power minus 2. So 962, that should be answer. Move to the next question, question number 4. For the following reaction, attain the equilibrium in the predicted correct way. See, hydrogen and iodine is a reactant and HI is a product. So HI gram will go upper side, where hydrogen and iodine will go downside. So let's see which answer could be the right one. Here the hydrogen is going upper side. This is the wrong pattern. Hydrogen is coming downside
Iodine is coming down side, HI is going upper side. This should be right. इसमें तीनों अपर साइड जा रहे हैं, गलत हो गया. इसमें हाइड्रोजन डाउन साइड, दिस वाज राइट बट दिस इज रॉन्ग. सो योर आंसर शुड बी 2. इजी था ये क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At temperature T, AB2 dissociate like that way, having degree of dissociation x, the correct expression of x in terms of Kp and P. Okay, तो ये क्वाइट जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उससे क्वाइट सिमिलर हो गया है. एंड दैट इज AB to AB and 1/2. इट सीम्स एक्चुअली सेम क्वेश्चन. देखो यहाँ पर x2y की जगह A2B किया है एंड x2 की जगह A2 और दिस इज द B2 1/2 किया. तो सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है. सो इसलिए हमें पुराने साल के पेपर ज़रूर करने चाहिए. सो बेस्ड ऑन that we got the answer, that is the 3 number already solved. Let's see question number 6. CO plus H2 will give you CH4 and H2O. So if the pressure applied over the system increased by 2-fold, डबल कर दिया है, टेम्परेचर फिक्स रखा है, तब क्या होगा? तो ये ली चैटलिया प्रिंसिपल का क्वेश्चन दिख रहा है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये तो सही दिख रहा है. क्यों? देखो डेल एन का वैल्यू जो है, सारे के सारे गैस हैं तो प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स चल रहे हैं और रिएक्टेंट साइड 3 + 1 4 मोल्स चल रहे हैं. तुम्हारा आंसर आ रहा है -2. मतलब प्रोडक्ट साइड तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मोल्स डिक्रीज हो रहा है. सो इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस दैट हाई प्रेशर इज फेवरेबल. तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि प्रेशर डबल फोल्ड किया गया है, 2 टाइम्स बढ़ाया गया है. तो बी ऑप्शन. अच्छा, तो सारे ऑप्शन में बी लगाया हुआ है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कॉन्सेंट्रेशन. नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर फिक्स रखा गया है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज एज रिएक्टेंट concentration of reactant product remains same. No, it's not right. Reaction will move to the forward direction. तो C वाला भी गलत, D वाला भी गलत, C भी गलत. हमारे पास अभी B बिल्कुल राइट चल रहा है, प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने वाले हैं. बट इफ यू चेक द ऑप्शंस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस. ओनली दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद द गिवन ऑप्शंस. तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे? 2 ही लगाएंगे. हाउएवर ए में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो उतना नहीं बढ़ने वाला है, इनफेक्ट कम ही होने वाला है एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस. एनीवे, सो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से सेकंड नंबर क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है. तो ये हो गए जनवरी शिफ्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन. इजी ही आया है, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ इज क्वाइट रिपीटेटिव, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी.